Hello everyone, welcome to LK Academy. Myself Jay Sharma. From today we're going to start our new lecture series related to modern history. There are a few things which we need to discuss before starting our lecture series of modern history. Modern history is not just modern history, but the history as a whole subject composed of ancient, medieval and modern is of two aspects. First is the factual information, and the second is the descriptive or the story of a history. So there are two type of information in historical subjects like modern history. So how to prepare for how to prepare for a preliminary point of view and the mains and answer writing point of view. So for that we need to discuss certain points. For example, if we talk about the preliminary point of view, which composed of factual information or the facts, but it is not possible for any aspirant to cover every single fact related to preliminary point of view. I would be recommending for a preliminary point of view a book as a Spectrum, which is a very good from preliminary point of view because it composes a huge number of facts. But to mug up all the facts is again, it's not that easy, or it's not that feasible to spend your so much time in mugging up all such facts. So in our lecture series we will be we will try to do a balanced approach, to keep a balanced approach for a preliminary type of question and for the mains answer writing type of question. So but for that we will be following a certain lectures, a certain standards. For example, in our modern history lecture series, I'm expecting that all the aspirants should be following running notes, practice of running notes. Whatever you are feeling is important, just write it down from the lecture videos, from the video lectures, and then go read it from your books. Now the question over history. Whenever an aspirant is trying to prepare for any history subjects, they are having certain issues about the book, which book to prefer. I would be recommending, as I have recommended for a preliminary point of view, Spectrum. But before reading Spectrum, we should focus on preparing our base. Books like Spectrum and any other history books are the standard books, which may not be able to develop your base for preparing the pillars of history. So how to prepare base? You can prepare your base by reading old NCERTs of history. And for modern history, I would be recommending a history textbook for class 12, modern India. So why to read NCERT, that to old NCERT prior? Because many of you have already read NCERTs, or many of you will be reading NCERTs. So you must have figured out, or you will find out that by reading NCERT you will be able to develop your base for preparing for mains perspective. Because if we go by Spectrum or any other book, it composed of various facts and a cut-to-cut information. So there is no shortcut, which proved to be a shortcut, but there is no shortcut, trust me, there is no shortcut for history subjects. You have to go through, you have to read line by line, you have to understand every single word, you have to understand every single consequences which led to the further development of modern history. For example, if any event occur, any policy by any emperor or by English East India Company, then its consequences you have to read. You have to understand the consequences of the events. So
that should be your point of view or your approach towards reading modern history. Why I'm emphasizing on that? Because trust me, after all these years of experience, I have learned one thing about history, or in fact the preliminary and the mains examination which is conducted by UPSC civil service examination. One thing is very much clear, that without preparing for mains, there is no point of appearing for preliminary examination. Because now what UPSC have approached towards questions is a more of analytical and critical approach. So for that you need to analyze the question, critically examine the question. So how to analyze the question? You can only analyze the question after reading the whole topic related to that question. So if we talk about revolt of 1857, if there is any question appear of revolt of 1857, it may be a factual, but it will be from analytical point of view, and you will be only be able to attempt that question in a preliminary. You will be only be able to attempt that question if you have go through that revolt of 1857, go through all the events, all the consequences of various events. Then only you will be able to attempt the question of a preliminary point of view. So for that, please do read an old version of NCERTs related to history, modern history, for a better understanding of the events. Because history is not possible. One thing you should always keep in mind, that it is not possible to read every single fact related to history. Various books have various authors, they will be providing you various facts, but it won't be feasible to go through every facts given by every author. So for a base, stick to the standard book, that is NCERT, old version of NCERT related to modern history of class 12, which would be very much productive for you. So this is how we'll be continuing our lecture. In the initial of lecture, I'll be providing certain questions related from a preliminary point of view of the previous lecture, which you have to answer in the comment section. And at the end of the lecture, I will be providing one analytical question from the mains point of view as an answer writing. So I'm expecting you to provide that answer too in the comment section for your self-evaluation and for our understanding that how much we are able to delivering our thought related to the subject. So let's start with our lecture series. So modern history started with the decline of Mughal Empire. In this lecture we will be discussing how the Mughal Empire, the mighty Mughal Empire, had so much great emperor, example Akbar, the great Akbar. Even though the empire declined at the hands of the English, what were the consequences of that? What were the roles of various other ruling kingdom, for example Rajputs, Maratha Sardars? We'll be discussing all this, and what were the causes for the decline of Mughal Empire and what were its consequences. So these things we'll be discussing. So one thing you should always keep in mind, that we should go for the deep understanding of the events. Like I won't be going by fact, which is not possible for to cover every single fact in the lectures. So you should go for that. I would be providing you the series of the facts, the events of the facts, and why and what were the consequences and what were the causes of the events. So that will be covering in our lectures. So if we start with the decline of Mughal Empire, as we all know, the mighty Mughal Empire, which was so much rich in its enrichment, huge army, huge peasants, still it fall. So from that point of view, we be going through
this decline of Mughal Empire, that the empire has declined and disintegrated during the first half of the 18th century. So when it started going declining, because one thing was very clear, that after the Battle of Plassey, the Battle of Buxar, we will be going through that in the coming lectures, that after the Battle of Plassey and Buxar in 1803, British has almost occupied the whole Delhi itself. So after the occupation of Delhi from the Britishers, it was very much evident that the Mughal Empire has been ended. Until 1857, after the event of 1857, the Mughal Empire has been stopped the legacy. That was the end of Mughal Empire. So now we will be going through what were the events which led to how the mighty empire have been fallen and which led to the decline of Mughal Empire. So we'll start with the Aurangzeb's, because Aurangzeb's policy were proved to be the major reason for the decline of Mughal Empire, because the unity and stability of the empire had shaken up. जो यूनिटी एंड स्टेबिलिटी थी एम्पायर में, वो सडनली शेकन अप हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब ने मेजर अटेम्प्ट यही किए थे टू गो फॉर द एक्सपांशन पॉलिसी. नाउ एक्सपांशन पॉलिसी में मेजर इश्यूज ये फेस होते हैं कि मुगल एम्पायर ने ऑलरेडी नॉर्दर्न पार्ट में एक्सपांशन इस्टेब्लिश किया हुआ था, वेस्टर्न पार्ट में एक्सपांशन था, एंड राजपूत्स एंड मराठास के साथ जो स्मॉल और लॉन्ग अलायंसेस थी वो मेंटेन हो रही थी. बट औरंगजेब एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ साउथवर्ड एक्सपांशन. नाउ साउथवर्ड एक्सपांशन में जो ऑलरेडी किंगडम थे, द मराठा सरदार्स एंड वेरियस साउथ किंगडम, सो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए अबाउट ऑफ द एक्सपांशन पॉलिसी. So certain decisions of Aurangzeb were proved to be the major fatal for the decline of Mughal Empire, because expansion policy में you have to provide army. अब जितनी आर्मी प्रोवाइड करोगे उनको उतना फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सो दैट लीड्स टू ह्यूज एक्सपेंसेस. सो अब ह्यूज एक्सपेंसेस, इट्स नॉट लाइक कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट ये आता है कि मुगल एम्पायर वाज ऑलरेडी अ रिच एम्पायर, तो वो ये एक्सपेंसेस क्यों नहीं बेयर कर पाया टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी. बिकॉज इफ़ वी गो बाय हिस्ट्री, इफ़ वी हैव गॉन थ्रू हिस्ट्री, अभी तक जितना भी पढ़ा है, तो उसमें एक चीज़ क्लियरली डिफ्लेक्ट हो रही है कि मुगल एम्परर्स जो भी थे, they were luxury living emperors. I'm not saying every Mughal emperor was a luxury loving emperor, but due to certain emperors desire or their habit, जो luxury थी वो achieve करने के लिए they have established, they have started developing the luxury of the emperor, but at the cost of maintaining the standing army or for the socio-economic conditions of the people. So these were the major reasons कि एक emperor की policies ऐसी थी, उनका एक mindset ऐसा था towards the socio-economic condition and towards their luxury, which led to the decline of the Mughal Empire. Because Mughal Empire जो था वो साउथवर्ड एक्सपांशन में बहुत ज़्यादा फंड चला गया एट द वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड एक एम्परर की प्रेस्टीज मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा फंड चला गया. सो दीज वर द मेजर रीजन. सो ऑन औरंगजेब की डेथ के बाद 3 सन्स के बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ. अमंग देम द 65-year-old बहादुर शाह इमर्ज एज द विक्टोरियस. Now औरंगजेब ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, that was the intolerance, कि उन्होंने मुस्लिम्स को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया था at the cost of various other religions.
So if we go by history, in fact in the ancient history, in the medieval ancient history, if we talk about the Ashoka, and in the medieval history if we talk about the Akbar, so दोनों एम्परर्स में मेजर जो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन थिंग्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे बोथ वर द ग्रेट एम्परर्स. Why the great emperor? Because they have adopted the policy of tolerance towards every religion. कि उन्होंने एक tolerant policy approach रखा कि जो narrow mindedness था, that my religion above all religion, वो साइड में रखा, एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए. बिकॉज दे हैव फिगर्ड आउट वन थिंग इन द माइंड कि दैट इफ़ दे वांट टू रिमेन इन पावर, कि अगर अपने को पावर में रहना है, इनफैक्ट इन डेमोक्रेसी भी यही चीज़ है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर को पावर में रहना है, सो विद इन 5 ईयर ऑफ टर्म, एक प्राइम मिनिस्टर का 5 ईयर का टर्म होगा, सो उसमें उनको ऐसी पॉलिसीज और इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हो, तो ही वो नेक्स्ट इलेक्शन में अगेन एज अ प्राइम मिनिस्टर का कंटेंडर, एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर स्टैंड कर सकते हैं. सो दिस थिंग हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय देन, बट दिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय औरंगजेब. सो औरंगजेब ने ये पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं करी थी, बट these policies were adopted by बहादुर शाह, जिन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट रखे कि टॉलरेंट पॉलिसी रखनी है, सोसाइटी में एक कोहेजन मेंटेन करना है, एंड ही आल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द नेबरिंग स्टेट. फॉर एग्जांपल राजपूत्स, मराठाज एंड रिबेलियस सिख्स, उनको वेरियस पोस्ट ऑफर की गई, एंड वेरियस राजपूत्स को वेरियस पोस्ट ऑफर की गई, मराठास को चौथ और सरदेश मुखी द टाइप ऑफ टैक्सेस जो मराठा किंगडम में लेवी किया जाता था, सो वो उनको अवेल किया गया. सो दिस वर द मेजर पॉलिसीज जो बहादुर शाह ने अडॉप्ट की थी. सो बहादुर शाह ने इस तरीके से वेरियस सेक्टर्स में एक नॉर्मलसी इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया था, विच वर डिस्टर्ब बाय द औरंगजेब पॉलिसी. However, after the death of Bahadur Shah in 1712, in 1712 में जब बहादुर शाह का डेथ हुआ, so बहादुर शाह was followed by जहांगीर शाह, he was his son, जो सपोर्ट किया गया जलंधर शाह को by जुल्फिकार खान, the most powerful noble of the time. Now noble क्या होता है? Nobles are type of ministers, कि एक for example if you talk about democracy, कि एक प्राइम मिनिस्टर के सर्टेन मिनिस्टर्स होंगे जो उनको गाइड करेंगे वेरियस सेक्टर्स में. सो वैसे ही जुल्फिकार खान was a noble of that time to the Jalandhar Shah, who supported the Jalandhar Shah to become as the emperor. So इस तरीके से वेरियस सिविल वॉर हुई, उसके अंदर जलंधर शाह was emerged as the victorious. Though Jalandhar Shah was quite weak and degenerate, उनको मेजर सपोर्ट दिया गया था जुल्फिकार खान, एंड जुल्फिकार खान वाज द मेड द वजीर ऑफ दैट टाइम, एंड जुल्फिकार खान वाज कंट्रोलिंग द मेजर पॉलिसीज जो जलंधर शाह फॉलो कर रहे थे. सो यहाँ पे उन्होंने ये एक अप्रोच रखा कि राजपूत के साथ अलायंस मेंटेन रखनी है, मराठा सरदार के साथ अलायंस मेंटेन रखना है, ताकि जो सेंचुरी से डेकेड से एक मुगल एम्पायर जो स्टैंड हो रहा है विद द सपोर्ट ऑफ राजपूत्स एंड जट्स, सिख्स, मराठास, वो मेंटेन रहे. सो इस तरीके से ये पॉलिसी तब अडॉप्ट की गई थी. वेयर एज आफ्टर जहांगीर शाह, फारूक शियार जिन्होंने एज अ एम्परर बने विद द सपोर्ट ऑफ सैयद ब्रदर कंपोज ऑफ अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान वाला, जिन्होंने सपोर्ट किया फारूक शियार को, एंड देन दे बिकेम द वजीर एंड मीर बख्शी रिस्पेक्टिवली. सो इस तरीके से उन्होंने फारूक शियार को सपोर्ट किया टू बिकम द एम्परर, बट इट वाज वेरी मच एविडेंट कि फारूक शियार वाज द वीक एम्परर ऑफ दैट टाइम, विच वाज नोन बाय द सैयद ब्रदर्स. नाउ सैयद ब्रदर्स आर ट्राइंग to gain control over Farooq Shia, and Farooq Shia was trying to retain his control, कि वो अपना कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर रहे थे, whereas सैयद ब्रदर्स
were trying to maintain their control. So this led to the struggle of power between the emperor on the one side and Wazir and Mir Bakshi on the other side. So यहाँ पे वापस डिस्टर्बेंस हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स में स्ट्रगल ऑफ पावर होगा सो वो एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे, वो सिटीजन्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे. सो दिस वाज प्रूव टू बी दी अनदर रीज़न कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में मेजर एक और रीज़न फॉलो हो गया आफ्टर द लग्जरी लिविंग लाइफस्टाइल से. एक और रीज़न है कि देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ पावर, देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल ऑफ पावर फॉर द एम्परर्स, कि यहाँ पे नोबल और एम्परर के बीच में भी स्ट्रगल ऑफ पावर हो रहा था. सो उससे ह्यूज डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ. Then finally in 1719 Sayyid brothers had killed Farooq Shiar, and then they raised Muhammad Shah as the emperor of India. Now Muhammad Shah became the emperor of India. So Sayyid brothers, they have adopted the policy of kingmaker कि वो एक मुगल फैमिली में से किंग बनाएंगे बट वो एज अ पपेट रहेगा. सो जो पॉलिसीज़ होगी वो सैयद ब्रदर ही अडॉप्ट करेंगे एंड द एम्परर हैव टू फॉलो देम. अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो दे विल किल द एम्परर एंड दे विल रेज एनी अदर मुगल फैमिली मेम्बर एज द एम्परर इन रिटर्न ऑफ जागीर्स. So this was the major effort. Whereas Sayyid brothers, they have adopted the policy of tolerance, religious tolerances जो उन्होंने adopt किया, but they failed to contain the rebellions. जो various rebellions थे against themselves, because there were many jealous nobles. Apart from Sayyid brothers, there were many jealous nobles जो जेलेसी हो रही थी उनको कि एक नोबल जो है बिकेम द सो पावरफुल. सैयद ब्रदर्स हैव बिकम द सो पावरफुल दैट दे आर नोन एज द किंग मेकर्स. सो दैट्स वाई यहाँ पे मेजर जो डिस्ट्रैक्ट पता चला इन 1720 जहाँ पे निज़ाम उल मुल्क जो एक नोबल था who succeeded in treacherously assassinating Hussain Ali Khan, the younger of the two brothers. That means Sayyid brothers में से जो younger था उनको assassinate कर दिया. The one noble has assassinated the another noble. So this again leads to disturbance in the administrative policy. So that's why एक जो disturbance रहा है administrative policy में वो prolong रहा है. That means that's why we are saying कि औरंगजेब की डेथ के बाद दो बहादुर शाह हैज ट्राइड टू मेंटेन द पीस, बट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल चलता रहा जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी इतना फोकस नहीं किया. सो यहाँ पे मेजर यही फोकस रहता गया ऑफ दिस फाइट्स दैट हु विल द किंग और हु विल बी द एम्परर. So after the death of Hussain Ali Khan, the younger brother of the Sayyid brothers, this end the domination of the Mughal empire by Sayyid brothers. जो Sayyid brothers का domination था Indian history में, we are known as a kingmakers, वो end रहा. And then came the reign of Muhammad Shah. Now Muhammad Shah को nearly 30 years का long reign मिला. This was considered to be the last chance of saving the empire, so which proved to be very much important, जहाँ पे बहुत सारे political factor को focus दिया गया, because a mighty Mughal empire has a huge army, has huge finances, a huge political factor. So if it be अगर एक proper implementation हो जाए पूरी policies का तो एक major change आ सकता है policy में कि जो decline हो रहा है वो रुक सके. However, this was not very much adopted because Muhammad Shah को raise किया गया by Nizam ul Mulk, the noble of the Mughal empire. But due to the policies, Nizam ul Mulk felt disgusted and he left the Delhi Darbar. उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया and then he shifted towards his own ambition and he found the state of Hyderabad. So that we'll be discussing in our next lecture about the Hyderabad and Karnataka. So as of now, the Muhammad Shah's long reign was disturbed by
by the first reason that एक powerful noble ने छोड़ दिया, एक empire को powerful noble ने छोड़ दिया, and second the foreign invasion that in 1738-39 the Persian invader named as Nadir Shah, he came in the northern plains of India and the empire lay prostrate because Nadir Shah was very much attracted to, of India's fabulous wealth जो पर्शिया से आए थे, एंड पर्शिया में जो प्रोलॉन्ग वॉर चल रहा था विद टर्की, फॉर दैट दे विल बी नीडिंग टू दे वुड बी नीडेड फंड टू मेंटेन एन आर्मी जो एक बैंकरप्ट हो चुकी थी. सो दिस शोड द वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि जो प्रोलॉन्ग निगलेक्ट हो रहा था ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के डिफेंसेस को मेंटेन करने के लिए, वो वीकनेस एक्सपोज हो चुका था of not just the Mughal Empire को, but the various small kingdoms of Indian and even the foreign companies. कि जो weakness of Mughal Empire है वो यहाँ पे आया, and Nadir Shah has entered India without facing any opposition. कोई भी आर्मी अपोजिशन नहीं रहा, बिकॉज जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का डिफेंसेस था वो हैज़ बीन ऑलवेज निगलेक्टेड. सी दिस इज़ द मेन रीज़न विच वी हैव बीन डिस्कसिंग, दैट वेरियस एम्परर्स जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे उन्होंने कभी यहाँ पे फोकस नहीं किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, या फिर जो एम्परर्स नोबल्स में फाइट हो रही थी, स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा था, नोबल वाज फाइटिंग विद अनदर नोबल. सो दिस लेड टू द ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि एक डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो रहा था कि ये सब फ्रंटियर को डेवलप करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए ये कभी फोकस हुआ नहीं. सो फ्रॉम दिस स्टार्टेड द डिक्लाइन of the Mughal Empire with the invasion of Nadir Shah, who occupied Lahore initially, and then he started marching towards Delhi. So the emperor जो था Muhammad Shah, he was captured and he was remained as a prisoner of the Nadir Shah, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रॉयल पोजीशन ले लिया था, रॉयल ट्रेजरी मेंटेन कर ली थी. Apart from this, he also carried away the famous Kohinoor diamond and the jeweler-studded peacock throne of Shahjahan. So this exposed the Mughal Empire, कि जो मुगल एम्पायर की वीकनेस थी वो एक्सपोज कर दी गई. Apart from this, there was a still chance that after Muhammad Shah's death in 1748, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था. See, the third reason, first reason was the luxury life, second reason was the noble fighting the another noble, and the third is the civil war. Whenever the death of the after the death of an empire, एक civil war broke out हो रहा है, जिसके वजह से वापस administration policy में compromise हो रहा है. So this led to further disintegration, the further partition, the further decline of the Mughal empire. So on that basis एक bitter struggle start हुआ, and then the repeated invasion by Ahmad Shah Abdali, who was the general of Nadir Shah, who helped him took over the Afghanistan. But in 1761, Ahmad Shah Abdali has even defeated the Marathas. So you can see or you can read the power impact of the Abdali's invasion, that कि वो southward expansion में मराठा तक पहुँच चुका था. So जो 1961 में third battle of Panipat, in which Ahmad Shah Abdali has defeated the Marathas, and thus gave a big blow to their ambition of controlling the Mughal emperor and thereby dominating the country. So this shows that जो weakness थी has been clearly reflected towards the of all the kingdom, that invasion has been reached towards the roots of the Indian subcontinent. Then came the Shah Alam II, who ascended the throne in 1759, जिन्होंने as an initial year has been spent as a wandering from one place to another place, जो अपनी capital से दूर रहे थे. And then
he joined in 1764. He joined Mir Qasim of Bengal, Shauja-ud-Dawla of Awadh, and has declared war upon English East India Company in the Battle of Buxar. However, they were defeated. English has defeated the every three, the Nizam, the Nawab, and the Mughal Emperor, and this led to the end of the kingdom in India. कि एक मुगल एम्परर जो था शाह आलम, who was put as a pensioner of the foreign power till 1857, and after 1857 the Britishers have abolished the Mughal emperor dynasty. So this led to the end of the Mughal empire. Till now we have seen the decline of Mughal empire, जहाँ पे हमने देखा कि how the Mughal empire has declined, what were the policies जो various emperor ने adopt की, उसके अलावा जो struggle रहा, power of struggle between emperors, between nobles, between noble and emperor, so उसकी वजह से किस तरीके से ये decline हुआ. Now we will be discussing about the certain causes of the Mughal empire, because it's not just one policy or the struggle. It considered of various factors and forces which led to the decline of Mughal empire. Though its beginning has started from the policies of the Aurangzeb. औरंगजेब ने मेजर पॉलिसी ये अडॉप्ट की थी, जैसे हमने डिस्कस किया कि साउथवर्ड एक्सपेंशन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड इन्वेस्ट कर दिया था कि एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने के लिए, मराठास को डिफीट करने के लिए एक ह्यूज फंड की नीड थी. सो दिस लेड टू द बैंक्रप्सी and he kept he stayed away from his own capital for almost 25 years and he died on the field. So this clearly show कि जो एक औरंगजेब एज ए एम्परर की जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो पॉलिटिकल या सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो फुलफिल नहीं ही, बिकॉज फॉर सेवरल ईयर्स ही वॉज इन एक्सपांशनरी पॉलिसी मेंटेन करने के लिए. सो इंडिया में एट दैट टाइम जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेवल था वो इतना हाई टेक नहीं था. उसके अलावा जो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स थे वो इतने कन्वीनियंट नहीं थे कि एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरे इंडिया में रूल कर सके. सो इट वाज वेरी मच जो ऑब्जेक्टिव था औरंगजेब का, इट वाज वेरी मच इन थियरी बट इट वाज नॉट इजी इन प्रैक्टिकल. सो दिस वाज द मेजर कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. सो जो वन ऑफ द बेसिक फेलियर था औरंगजेब का इज इट्स स्टेटमैनशिप, कि औरंगजेब ने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अडॉप्ट किया, एंड उसकी जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स हिंदू रूलर्स, इट डैमेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. इट्स नॉट जस्ट हिंदू, अबाउट ऑफ वेरियस रूलर्स, बिकॉज औरंगजेब एक मेजर पॉलिसी, एक टैक्स लगाता था ऑन नॉन मुस्लिम, दैट इज जिजिया टैक्स, जो एक पिलग्रिमेज टैक्स लगता था ऑन नॉन मुस्लिम्स. सो उससे सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि अगर एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट करेगा एंड अदर रिलीजन को डिसग्रेड करेगा, सो जो अदर रिलीजन के सिटीजन दे वॉन्ट बी हैप्पी. सो उससे सूनर और लेटर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा सोसाइटी में, so which will lead to the fall of the government or the fall of the monarch. This was happened with Aurangzeb too. So Aurangzeb ने जो conflict था of the various Rajput state, उसके serious consequences थे, क्योंकि if you go by the medieval history, जहाँ पे देखा गया है कि जो मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्परर की स्ट्रेंथ थी, जो पिलर्स थे, they were the Rajput राजास. बट अगर उनके साथ एनिमिटी कर लिया तो वो अपना सपोर्ट हटा लिया, देन ऑल द राजपूत्स हैव यूनाइटेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. सो जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का, अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं आएगा, सो इट लेफ्ट टू द जस्ट सेंट्रल पार्ट. साउथ में नहीं है, वेस्ट से सपोर्ट नहीं आ रहा, ईस्ट में इतना इस्टेब्लिश एक्सपांशन नहीं हुआ है, सो जस्ट सेंट्रल पार्ट.
So this proved to be very fatal for the kingdom. So जो strength थी औरंगजेब की administration, this was challenged by various nerve center around the Satnami or the Jats, the Sikh uprising. ये जो भी uprising थे, जिनकी main strength थी peasants, बिकॉज पीसेंट्स ये अपराइजिंग हेड कर रहे थे. सो उसके वजह से जो एक सपोर्ट होना चाहिए, सोसाइटल सपोर्ट, वो भी लैक कर रहा था. देन औरंगजेब की जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया, जैसे जिजिया टैक्स की हमने जैसे बात किया. सो इफ़ औरंगजेब हैज़ लेफ्ट द एम्पायर विथ मैनी प्रॉब्लम्स अनसॉल्व, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बहुत सारे प्रॉब्लम्स अनसॉल्व रह गए. एंड द सिचुएशन वॉज फर्दर वर्सन. ये सिचुएशन कब वर्सन है, जैसे हमने डिस्कस किया कि पावर स्ट्रगल इंक्रीज हुआ, एक वॉर्स ऑफ सक्सेशन, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी एम्परर एक वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है, जिसके अंदर ब्रिलियंट कमांडर्स, ब्रिलियंट नोबल्स की डेथ हो रही है, ब्रिलियंट एम्परर्स की डेथ हो रही है, जो एक बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते थे. एंड वेरियस फंड वहाँ पे यूज़ हो रहा है. सो दिस लेड टू द प्रॉब्लम, बिकॉज कोई भी नोबल, फॉर एग्जांपल एक सैयद ब्रदर एक एम्परर को रेस कर रहा है. फॉर एग्जांपल सैयद ब्रदर ने फारूक शियार को रेस किया. सो इन रिटर्न फारूक शियार वेरियस जागीर्स देगा टू सैयद ब्रदर्स. ना जागीर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ लैंड जो प्रोवाइड किया जा रहा था एम्परर्स को, इफ़ दे आर हैप्पी विद द पॉलिसी ऑफ नोबल, तो एक ये जागीर प्रोवाइड करा जा रहा था. बट इससे एक इशू ये हो रहा था कि वेरियस नोबल को अगर जागीर दे रहे थे वन नोबल को, तो अदर नोबल में वो जेलेसी फीलिंग क्रिएट हो रही थी. देन जो नोबल को जागीर नहीं दी जा रही है तो वो कॉन्स्पायर कर रहा था टुवर्ड्स द अनदर नोबल, एंड दिस लेड टू द स्ट्रगल बिटवीन नोबल एंड नोबल. बट जो जागीर की प्रैक्टिस थी वो इतनी प्रोलॉन्ग थी कि एट द एंड ऑफ दी और एट द डॉन ऑफ द मुगल एम्पायर, जागीर प्रैक्टिस हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी सो फैटल दैट जो फंड है वही बहुत पॉजिटिव हो गया था, कि जागीर बहुत पॉजिटिव हो गया था कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए जो लोगों की नीड्स है वही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे. सो ये एक प्रॉब्लम था. So that's why जो apart from personalities of the great Mughals, जो Mughal Empire की strength थी was lay in the organization and character of its nobility. जो nobles थे उनके अंदर ये major strength थी, but due to their luxury, due to their character, due to their poor education, they have monopolized. And एक popular belief जैसे हमने अभी discuss किया about the selfishness, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया. सो एक बेसिक कॉज अगर बात किया जाए ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर वाज दैट इट कुड नो लॉन्गर सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन. उसके अलावा जो ऑल दिस फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किया, उससे स्टैग्नेशन आया इन एग्रीकल्चर में. एंड एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आया यानी कि जो मासेस है, जो पीजेंट्स है, उनका लाइफ लॉन्ग हैज़ बीन पुट टू होल्ड, बिकॉज जो लैंड टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था. मैनी पीजेंट्स हैव लीविंग द लैंड, दे हैव ऑलमोस्ट लीव द लैंड टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस. दिस लेड टू वेरियस अपराइजिंग्स, दैट इज़ द सतनामी, द जट्स एंड द सिख अपराइजिंग, जो एक पीजेंट इनकी बैकबोन थी. सो वो एक डिटेरियोरेट किया towards the decline of the Mughal empire. And as a matter of fact, agriculture was no longer producing enough surplus, कि agriculture से जो surplus expect किया जा रहा था वो enough नहीं हो रहा था, कि इनफैक्ट वो empire की need fulfill नहीं कर पा रहा था, because empire was going towards constant warfare. constant warfare में जा रहा है एक साइड से, कि warfare increase कर रहे हैं, एक्सपांशनरी पॉलिसी है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया कि औरंगजेब एक एक्सपांशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की है, यानी कि कांस्टेंट वॉरफेयर चल रहा है फॉर प्रोलॉन्ग ईयर्स. सो उसमें काफ़ी ज़्यादा फंड जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जाएगा ऑन द वन हैंड. एंड ऑन द अदर हैंड एम्परर्स एंड नोबल्स की लग्जरीज इंक्रीज हो रही है, सो उसमें भी अलग रिसोर्स जाएगा. सो अगर सारा रिसोर्स वॉर मेंटेन करने के लिए या लग्जरीज मेंटेन करने के लिए चला जाएगा, सो जो पीजेंट्स है
या कोई भी और ट्रेडर्स है उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा. सो वहाँ पे एक स्टेग्नेशन मेंटेन हो गया, एक स्टेग्नेशन विटनेस किया गया अबाउट द वेरियस सोसाइटल क्लासेस. उसके अलावा जो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का नीड था वो टाइम भी नहीं हुआ. जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में जो टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन की नीड थी वो भी नहीं हुआ. So this shows that India remained backward as compared to the Western world, and this shows that why a foreign company, a trading company आई, उन्होंने एक आर्मी स्टैंड की जिनके पास एक मेजर टेक्नोलॉजी थी. They were not that backward. Societal upgradation था, technological upgradation था, trade and industry upgraded थी. So this led to their superiority कि एक लॉजिकल अप्रोच आया उनमें and they overpowered the Indian rulers. So this was the major reason कि Western world at that time, at the contemporary time, जहाँ पे Indian rulers जो warfare कर रहे हैं internally and luxuries बढ़ा रहे हैं, at that time they were promoting trade and industries and scientific technology डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन की बात चल रही थी. सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का चल रहा था. सो इंडिया एट दैट टाइम लैग बिहाइंड एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज. दैट्स वाई दिस लेड टू द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 150 years. And another important socio-economic, socio-political cause of the downfall of the Mughal Empire was the absence of the spirit of political nationalism among the people. जैसे हमने डिस्कस किया कि औरंगजेब एक्सपांशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि साउथवर्ड एक्सपांशन में कर रहा है. मराठास के अगेंस्ट वॉर कर रहा है. चोलास, चेतियाज, जो भी साउथ में किंगडम्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट वॉरफेयर हो रहा है. सो इससे क्या हो रहा है कि एक कंट्री में दो दे ऑल आर इंडियंस बट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. व्हाई दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर? बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया लैक द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कि एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट, एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. So in fact, there did not exist the ideal of living and dying for one's nation. Instead, people were loyal to their persons, their tribes, their caste and their religious sects, not about their nations, because there was no concept of nation state. और यही अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, if you go by the history of the world history, जहाँ पे the concept of nation state has emerged in the medieval time. So मॉडर्न टाइम तक वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया कि एक नेशन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका था. एंड इंडिया वॉज स्टिल लैकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म कि यहाँ पे अभी तक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ ही नहीं था. सो दिस वाज वन ऑफ द अनदर कॉज ऑफ द डिक्लाइन कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं था, कोई भी पीजन लॉयल नहीं था. दे वर लॉयल टू जस्ट देयर विलेज एंड देयर कास्ट. कोई भी पीजन ने पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया. वेयरएज जो ज़मींदार्स थे, नोबल्स थे, दे वर ऑल वर्किंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट. एंड जो वेरियस अपराइजिंग थे वो भी उनके सेल्फ इंटरेस्ट में ही था. सो एज अ नेशन कॉन्सेप्ट हैज़ बीन नेवर इमर्ज एट दैट टाइम. Whereas another cause was the Mughal Empire might have continued to exist for a long time अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो आर्म पावर था वो ब्रोक डाउन नहीं हो जाता. सो मोस्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स विच वी हैव डिस्कस्ड, उसके कंसिडर लेके ये डिक्लाइन इतना ज़्यादा विटनेस हुआ कि जो डिसओबीडियंस था, जो इनएफिशिएंसी थी, जो ब्राइबरी था, करप्शन था, इनडिसिप्लिन था, दिस लेड टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. एंड अल्टीमेटली जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी एम्पायर की वॉज वेरी मच अफेक्टेड बिकॉज एवरीवन वाज गोइंग फॉर कांस्टेंट वॉरफेयर. सो अगर कांस्टेंट वॉरफेयर में ही टाइम चला जाएगा, सो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए रिसोर्सेज की नीड है वहाँ पे अपग्रेडेशन होगा ही नहीं. And then the final blow of Mughal Empire was given by a series of foreign invasions, that is by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, जहाँ पे उन्होंने खुद को एक्सपोज किया
not just to the kingdoms of the southern kingdoms, but also to the foreign trading companies. And then finally, the emergence of the British challenge took away the last hope of the revival of the crisis-ridden empire. So, यहाँ पे in this last fact of the British, the emergence of British is the most important consequence. So जो consequences की हम बात कर रहे थे कि कोई भी event हो रहा है उसके बाद जो consequences होगा, so this is the major consequence of the decline of Mughal Empire, कि एक foreign power आया, उन्होंने अपना एक power establish किया, एक company establish की, company से एक army establish करी, and then slowly and gradually उन्होंने जितने भी kingdom थे मराठास, राजपूत्स, जो who all lacked the spirit of nationalism, उनके खिलाफ कॉन्स्पायर किया, उनको एक दूसरे से फाइट करवाया, एंड देन वन बाय वन सबको एलिमिनेट करके एक सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया. सो दिस वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंस कि एक फॉरेन कंपनी आई जहाँ पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो चुका था, जहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी, आर्मी काफ़ी एडवांस थी, जिन्होंने टाइमली अपग्रेडेशन किया था अनलाइक इंडियन rulers. So this was the major cause of the decline. So if we अगर हम इसको पूरा as a conclude करें, if we conclude, it started with the Aurangzeb's policy. Then after the death of Aurangzeb, Bahadur Shah has tried to stable the policies of the Mughal Empire, but after his death, a prolonged civil war. That after the death of every emperor, एक civil war हुआ. Then fight between nobles, Sayyid brothers, Nizam ul-Mulk, जिन्होंने king emperor को raise कर रहे हैं, but then उन्हीं के बीच में fight हो जा रही है जिससे administration पे वापस ध्यान नहीं जा रहा है. Then invasions हुए by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, and then the last emperor, that was Shah Alam II, who tried to maintain, but he was remain as a mere pensioner. So till then it was very late. So this was the our today's lecture, and from that I want you to give one answer related to the question of today's lecture, like critically examine the Aurangzeb's responsibility for the decline of the Mughal Empire. Please do give your answer of this question in the comment section for your self evaluation, that how much you have been gained in your productive hours. That was our today's lecture. In our next lecture, we'll be discussing about Indian states and society in the 18th century, that what were the states, what were the society or state policies जो थी. For example, Hyderabad, Carnatic states, वहाँ पे क्या policies थी, Bengal, Awadh, all this will be Mysore, all this we will be discussing in our next lecture, and then we'll also discuss about the societal and cultural factors of the contemporary times. That will be our next lecture. So till then, stay safe and study. Thank you.